Hello student, today I will describe the Rutherford scattering experiment. Rutherford done a series of experiments along with his associate the Marsden and Geiger. The best experiment by which the Rutherford and his associate finally gave a complete picture of the atom. Conclude the atom. So what is the structure of atom? He concluded by an experiment. The main features of the experiment, the setup was shown on the board. This is a lead cavity. यह एक lead cavity है and narrow slit. This is the narrow slit and evacuated glass tube. Whereas the whole setup are under a glass tube, but a section of these are shown here. Whole setup are in a evacuated glass tube, but only a section is shown here. This is the evacuated glass tube in which a narrow holes are made. In the center of the glass tube, a thin gold foil is situated. This is the detector, also called the movable microscope, by which it was observed how the scattered alpha particle through the gold foil. In the cavity, to produce the alpha particles. What is the alpha particles? Alpha particles, it is denoted by alpha. It carries the +2 unit positive charge and having mass 4 unit. It is similar to the helium. Helium, when the 2 electron from the helium is removed, then the helium becomes such that helium ion +2 mass 4. That means we can say alpha particle is none other, it is the ion of the helium. Bismuth is a radioactive element which produces the alpha particles. This bismuth is placed in the cavity made in the lead box, from which the alpha particles are thrown out in all possible directions, In narrow holes are made in the lead cavity. All these alpha particles are absorbed by the lead. Only those alpha particles which emit in this direction of the hole made are passing through. These alpha particles passing through the narrow slit, and the beam is a strike to the thin gold foil. This is the thin gold foil. Actual Rutherford used the alpha particles nearly 5.5 mega electron volt. 5 alpha particles he used as the alpha particles of 5.5 mega electron volt. Again, the speed of the alpha particles is kept the
velocity, that is the velocity is kept the 1.6 into 10 का power minus 8 meter per second. 10 का power 7 meter per second. The thickness of the gold foil is kept 2.1 thickness of gold foil is nearly 2.16 into 10 का power minus 7 meter. Rutherford used the alpha particles of strength 5.5 mega electron volt, and the velocity of these particles are 1.6 into 10 का power 7 meter per second, and the thickness of the gold foil nearly 2.16 into 10 का power 7 meter. When the alpha particles strike on this thin gold foil, it gets scattered. The evacuated glass tube is coated with the phosphor materials like the zinc sulfide. The movable microscope is used to observe those alpha particles which passes through the gold foil. गोल्ड फॉयल से गुजरने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको जो है ऑब्जर्व करने के लिए इस डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है. द पॉइंट एट विच द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ए फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस. जहां जहां पर यह स्ट्राइक करते हैं वहां वहां पर एक फ्लैश ऑफ लाइट जो है ना दिखाई देता है, और उसी फ्लैश ऑफ लाइट को इस मूवेबल माइक्रोस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया जाता है. इस मूवेबल माइक्रोस्कोप को चारों ओर घुमाया जाता है टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विद द पासेज. हाउ मेनी आर पासेज स्ट्राइक इन द फ्रंट, हाउ मेनी स्कैटर्ड बाय व्हाट एंगल, कितने एंगल से कौन कौन जो है यह जो है स्कैटर्ड होते हैं. Found most of the alpha particles strike in the front of the evacuated glass tube, and few are deflected with some angle nearly less than 90 degree. Scattered through less than the 90 degree. Very few of them are scattered larger than the 90 degree. Larger than the 90 degree एंगल पर कुछ जो है बहुत छोटे एंगल से जो है डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत जो है कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ जो है मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते हैं. एंड वेरी लीस्ट नियरली 1 in 8,000, यानी लगभग एक अल्फा पार्टिकल्स 8,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द 180 डिग्री एंगल. ठीक है, दीज आर द एक्सपेरिमेंट. ये पूरा सेटअप ये जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का स्कैटरिंग, जिसमें अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स जो थिन गोल्ड फॉइल से पार कर जाते हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज थ्रू द गोल्ड फॉइल विच इज ऑब्जर्व. द नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विच पासेज थ्रू आर ऑब्जर्व बाय द मूवेबल माइक्रोस्कोप. कैसे? व्हेन दे स्ट्राइक द फॉस्फर मटेरियल ए फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस. उसी की काउंटिंग कर लेते हैं, उससे पता चलता है कि हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल पासेज. ठीक है,
ये मूवेबल करने से चारों ओर है ना, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय व्हाट एंगल्स, कितने एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इससे हम जो है पता कर लेते हैं. तो दिस इज द Rutherford scattering experiment. Observation and conclusion remains, which I will describe in the next video. Thanks.